Let's see what are the objectives of this video. So we'll cover area of a square, area of a rectangle, and also area of a triangle. We'll see what formulas are there, and also we'll cover some exercises. So here in this video we'll cover complete exercise 45 and complete exercise 46. So let's see here the area of a square. So here we have a square whose side is, let's say, the measure is A. Okay. Now a square is a diagram or a figure in which all the sides are the same. So if this is A, this also is going to be A. So here we have area of a square is equal to, the formula is side into side. Now what is a side here? It is A. So it is going to be A into A. Now when you multiply this, you get A square. Okay. So let's see an example. Now let's say A is equal to 5 centimeters. That means this measure A is equal to 5 centimeters. Now what is the formula of the area? It is side into side. So it will be 5 centimeters into 5 centimeters. So when you multiply 5 by 5, you get 25. Centimeter into centimeter is centimeter square. Always remember the unit of area is centimeter square. Now let's see the area of a rectangle. So in this case you have a rectangle where L is the length. Okay, so this side is the length of the rectangle and this is the breadth. So that we denote it as B. So what is the area of a rectangle? The formula is length into breadth. So in this case we have L as the length and B as the breadth. So let's take an example. Now suppose the length was 5 centimeters and the breadth is 4 centimeters. So what is the area? It is going to be 5 centimeter into 4 centimeter. So that gives us 5 into 4, 20. Centimeter into centimeter will give us centimeter square. Now in this slide, let us consider the area of all types of triangles. So the first triangle that we will look at is right angle triangle. So it is a triangle in which one of the angles is a right angle. That is called as a right angle triangle. So here we have a right angle triangle ACB, where angle ACB is the right angle, it is 90 degrees. So in this case, AC is the height of this triangle and BC is the base. Okay, so in any given triangle, you have to identify the height and base. In a right angle triangle, first identify which is the 90 degrees and the two sides that form the right angle. One is the height and the other is the base. So if you identify in this case, in this triangle, you have height is side AC and base is side BC. Either you say it as BC or you can also say it as CB. Now let's consider a triangle which is a acute triangle. What does that mean? All the angles of this triangle are less than 90. Okay, so if you see in this case, all these triangles, in this triangle, all these angles are less than 90. So where is the height here? So in this case, the point from P to R, that is this straight line, it has to be perpendicular to the base. PR is perpendicular, that means it forms a 90 degree angle with the base. So PR is the height that we denote it as H and the base is going to be SQ. Okay, so this is the base. Now just let us just write it. So height is equal to PR, okay, and base is equal to SQ. Now let us consider the third type of triangle, which is an obtuse triangle. So in case of an obtuse triangle, one of the angles, the measure is more than 90. Okay, so let's consider this triangle XYZ, where the angle Z is the obtuse angle. So in this case, let's find what is the height and what is the base. So here it is clear that ZY is the base, okay, and height, we need a side which is perpendicular. Now in this case, there is no perpendicular side, that is a straight line which forms 90. So what you should be doing is extend this line further, something like this. Let us extend a line from this point X up to Y and also extend this YZ where it meets W. Here if you see, it forms a 90 degrees. Okay, so in case of an obtuse angle, you need to draw a perpendicular to the base and XW becomes your height. Okay, now remember the base is not WY. This is not considered the base. The original side of the triangle is YZ. So only that is the base of the triangle. Okay,
So height is equal to xw and base is equal to zy. So in any triangle, whether it is right angled, acute or obtuse, the formula is still the same. Okay, so let's see. So what is the formula for area of a triangle? It is going to be half into base into height. Okay, so in any given triangle, first you identify what is the height, you identify what is the base, and just substitute. So again, area of a triangle is half into base into height. Let's look at problem set 45. The first sum here is, if the side of a square is 12 centimeter, find its area. So the solution here is, first let us write what is given. Okay, so what is given to us is the side is equal to 12 centimeter. Now for simplicity, always let us draw a rough diagram. So here you have a square and it is given to us that the side is 12 centimeter. Okay, so one side is 12, the other side is also going to be 12. Now what is asked? Area is supposed to be found out. So what is the formula for area of a square? We have already seen that it is side into side. Let us substitute the value of this side. What do you have? It is 12 centimeters. So it is 12 into 12. So when you multiply this, you get 144 and the unit is going to be centimeter square. The second problem is, if the length of a rectangle is 15 centimeters and the breadth is 5 centimeters, find its area. So here the solution is, so we'll draw a diagram that is a rectangle where you have the length as 15. So this is the length and the breadth is given to us, which is 5. Okay. Now first let us write what is given, that is the length of a rectangle is 15 centimeters and breadth is 5 centimeters. First write what is given, so your sum becomes easy. And then what we want to find is its area. So what is the formula? Area of a rectangle is length into breadth. Let's substitute these values. So here you have 15 into 5. So when you multiply this, you get 15 4 is 60, 15 5 is 75. So that becomes 75 centimeter square. The next sum, the area of a rectangle is 102 square centimeter. If the length is 17 centimeter, what is its perimeter? So here the solution is, so again this is a rectangle where you have the length is 17 centimeters. The breadth is not given to us. So let us write whatever is given and whatever needs to be found out. So what is given? Area is given, right? That is 102 square centimeter. So you write down the area and then what is given? Length, that is equal to 17 centimeter. To be very careful of the units, okay? Just write whatever units are given, whether it is meter, whether it is centimeter. What is to find? They have asked us to find perimeter. So perimeter is equal to question mark. Now to find the perimeter, you also need you need to find the breadth of the rectangle. So breadth is also equal to question mark. So what we'll say, let the breadth is equal to b. Okay. Now where is the breadth? So this side is the breadth of the rectangle. Now area is given to us. So what formula we'll use? We'll substitute this area and from this formula we'll find the value of breadth. Okay. So area of a rectangle is length into breadth. Now let's substitute all these values. You have the area which is given to us is 102. The length is 17 and the breadth is taken as b. Now 17 comes on the other side, right, of equal to. So you have 102 divided by 17 is equal to b. So when you divide 102 by 17, you get b is equal to 6 centimeters. So now we have found breadth. We'll substitute this breadth in the perimeter formula. So what is the formula of perimeter of a rectangle? That is, perimeter of a rectangle is equal to 2 bracket length plus breadth. So we have already seen in the earlier video that what is a perimeter? It is the sum of all these sides. You have 2 length and 2 breadth. So that gives us 2 bracket length plus breadth. So let's quickly substitute the formula, the values. You have 2 bracket 17 plus 6. First you need to solve this bracket and then multiply with 2. So you get 17 plus 6 is equal to 23. Multiply by 2. You get the answer as 46 centimeter. The fourth sum. If the side of a square
is tripled, how many times will its area be as compared to the area of the original square? So यहाँ पे what is the diagram? It's a square, okay? And there are two squares to be considered. The first where the side is given, and then the second one where the side of the square is tripled, okay? So let's start. What we'll write is, so here you have two squares. So you will say let the original square is S1 and assume that its side be A. Okay, so we'll draw a square and we'll give the side the measurement of A. Now we'll have to take another square S2, right? So let the new square be S2 and that will be bigger in size. Okay, and what is the length of that? What is the length of the side of the new square going to be? What is it given? If the side is triple यानी multiply by 3, ठीक है? तो side of the new square is triple, that means पहले क्या था? A हमने assume किया है, तो triple यानी 3 से multiply करना है, so you get 3A and just write it here in the diagram. अभी हमें करना क्या है? दोनों एरिया को कंपेयर करना है. See what they've asked, how many times will its area be as compared to the area of the original square? तो हम दोनों स्क्वायर्स के एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर S1 is what? The formula is side into side, that is A into A is A square. Similarly हम एरिया ऑफ द स्क्वायर S2 फाइंड आउट करेंगे, which is 3A into 3A, that gives me 9A square because this is A into A. Now logic क्या करना है? Whenever you have to compare, any two, the areas of any two squares या perimeter हो या जो भी हो, whenever you have to compare, what you do, you divide. ये हमने already हमारे previous video में cover किया है. So what we'll do is area of square 1 upon area of square 2. Okay, so we'll write S1 upon S2 और उसके values substitute करेंगे. तो values क्या है हमारे पास? This is A2 S1 and S2 is 9A square. ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट बिफोर दैट दिस A2 and this A2 gets cancelled, right? So what remains is 1 upon 9. So 9 यहाँ जाएगा और S2 यहाँ जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में. So you get the answer as 9 into S1 is equal to S2. So now we are comparing the area of both the squares, right? हमने 9 को मल्टीप्लाई किया एरिया ऑफ स्क्वायर 1 से, तभी हमें एरिया ऑफ S2 मिलता है. ठीक है, सो वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी? सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर, दैट इज S2, इज 9 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर. तो इस ऐसे टाइप के सम्स में यही याद रखना है, व्हेनेवर यू हैव टू कंपेयर, आप दोनों के एरियाज फाइंड आउट करो एंड देन यू हैव टू डिवाइड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई और आपको आंसर मिल जाता है. ठीक है, अब हम सम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 46 का देखेंगे. ठीक है, द फर्स्ट सम, अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज इट्स एरिया? तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करना है कि पेज का शेप क्या है, वेदर इट इज़ रेक्टेंगल, स्क्वायर और अ ट्राइंगल. अब जिस तरीके से लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है, व्हाट डज इट शो? दैट इट इज़ द शेप इज़ अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसका लेंथ और उसका ब्रेथ. सो लेंथ इज़ 45 एंड ब्रेथ इज़ 26. गिवन में भी वो सेम चीज़ लिख देंगे. ठीक है, दैट मेक्स अ सम सिंपल. अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करता है? हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम किसका एरिया फाइंड आउट करेंगे? रेक्टेंगल का, बिकॉज ये शेप रेक्टेंगल है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दैट इज़ 45 into 26. What that gives me? 1170 square centimeter, because this is the unit of area. Second sum, what is the area of a triangle with base 4.8 centimeter and height is 3.6 centimeter? तो पहले हम गिवन लिख देते हैं. बेस दिया है 4.8, हाइट दिया है 3.6 सेंटीमीटर और तुरंत एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. शेप क्या दिया है? ट्राइंगल. सो विल ड्रॉ अ ट्राइंगल. अब हाइट अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या है? इट हैज़ टू बी अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू द बेस. ठीक है, तो हाइट इज़ 3.6 और बेस क्या हो जाएगा आपका? ये है बेस, दैट इज़ 4.8. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया. नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट.
ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया. अब लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. तो हाफ इंटू बेस इज़ 4.8, हाइट इज़ 3.6. जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने जस्ट एक वर्किंग एरिया में आपको बताया है कि मल्टीप्लाई करते वक्त अगर डेसिमल्स है तो क्या ध्यान में रखना है. जब मैं ये 4.8 3.6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 1728. ना हाउ टू प्लेस द डेसिमल. देखो इस नंबर में डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है 1, इस नंबर में कितने हैं 1, सो 1 + 1 दैट इज़ 2. तो हमारे आंसर में हम 2 नंबर्स काउंट करेंगे एंड देन वी प्लेस द डेसिमल पॉइंट. सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, तो हमको आंसर मिलता है हाफ इंटू 17.28. दैट गिव्स अस 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, the third sum. What is the value of a rectangular plot of land? Length कितना है 75.5 मीटर और breadth कितना है 30.5 मीटर. At the rate of 1000 rupees per square meter. तो पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि उसका शेप क्या है, रेक्टेंगल है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है एंड हमें वैल्यू फाइंड आउट करना. दैट मीन्स टोटल लैंड का रेट कितना है और 1 स्क्वायर मीटर का रेट दिया है 1000. ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सारा गिवन लिख देंगे. गिवन इज़ वॉट, लेंथ, ब्रेथ एंड रेट दिया है 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. तो फॉर अंडरस्टैंडिंग विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. तो ये शेप है रेक्टेंगल, ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा ब्रेथ हो गया. ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ द प्लॉट इन रुपीज़. ओके, नाउ तो हम लॉजिक क्या यूज़ करेंगे, पहले हम ये टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और 1 स्क्वायर मीटर का रेट दिया है. तो जब हमने टोटल एरिया निकाल दिया तो हम क्या करेंगे, वो टोटल एरिया मल्टीप्लाइड विद दिस 1000 रुपीज़ विल गिव मी द टोटल वैल्यू ऑफ द प्लॉट, है ना. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो यू गेट 75.5 इंटू 30.5. तो आपको आंसर मिलता है 2302.75 स्क्वायर मीटर. ये हो गया एरिया का यूनिट. अब हमें टोटल एरिया मिल गया और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो वैल्यू ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर मीटर का रेट दैट इज़ 1000 इंटू द टोटल एरिया. ओके, दैट विल गिव मी this much rupees, that is 2302,750 is the value of the entire plot. Okay, fourth sum. A rectangular hall is 12 meters long. Okay, shape क्या है, rectangle है, length क्या है 12 meters और breadth क्या है 6 meter broad. Its flooring is to be made of square tiles of 30 centimeter. ठीक है, तो बड़ा सा हॉल है और उसमें हमें टाइल्स लगानी है और एक टाइल की साइज़ कितनी है 30 सेंटीमीटर. हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ़ द टाइल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर वर यूज्ड. तो पहले हम क्या करेंगे, सारा गिवन लिख देंगे. गिवन क्या है, लेंथ इज़ 12 मीटर्स, ब्रेथ इज़ 6 मीटर्स. अब ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे आपको मेजरमेंट मीटर्स में दिया गया है और टाइल्स का मेजर इज़ सेंटीमीटर. या तो हम सारा मीटर में कन्वर्ट करेंगे या सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ हमने क्या किया है, लेंथ 12 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है. ओके, एंड कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखो 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पे कितना है 12 मीटर्स. तो 12 मीटर्स इज़ हाउ मच, सो यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या होता है 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1, दैट गिव्स अस 1200 सेंटीमीटर. वैसे ही आप 6 मीटर्स को कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 600 सेंटीमीटर्स. ओके, अब हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ टू फाइंड. पहले क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. और सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर हॉल जिसका ब्रेथ है 6 एंड लेंथ है 12. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का और फिर हम एरिया ऑफ 1 टाइल फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो लॉजिक क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितना था 1200, ब्रेथ 600. तो दैट गिव्स मी दिस वैल्यू स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ टाइल फाइंड आउट करेंगे. कितना था 30 सेंटीमीटर. सो इट विल बी साइड इंटू साइड,
एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का साइड इनटू साइड. सो 13 into 30 gives us 900 स्क्वायर सेंटीमीटर. अभी मुझे नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, ये टोटल एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ वन टाइल विल गिव मी द नंबर ऑफ टाइल्स. करेक्ट. सो हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर इज टोटल एरिया जो हमने फाइंड आउट किया है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन स्क्वायर. तो दैट गिव्स अस 8000 टाइल्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर. तो देखो, समझो ये हमारी टाइल्स है. ठीक है, तो लॉजिक क्या बनता है कि ये ऐसी छोटी छोटी टाइल्स जो 15 सेंटीमीटर है वो मुझे इस टोटल हॉल में फिट करनी है. अब दो तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं. द फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर. देखो, ये पहले क्या था 30 सेंटीमीटर और अभी क्या है 15 सेंटीमीटर. इसमें डिफरेंस कितना है 15 और 30 में, 15 इज़ हाफ दैट ऑफ 30 सेंटीमीटर्स. यानी मुझे अगर 15 सेंटीमीटर की टाइल्स है तो मुझे ज़्यादा टाइल्स लगेगी. और कितनी ज़्यादा लगेगी, देखो यहाँ पे 8000 टाइल्स है. अब ये हाफ से कम, हाफ है. ठीक है ना. सो एरिया जब हम कंसिडर करते हैं स्क्वायर का तो साइड इनटू साइड लेते हैं, राइट. तो एक साइड डबल हो गया, 15 2 ज़ा 30 है, और दूसरा साइड भी हमको डबल करना पड़ेगा. सो 15 2 ज़ा 30, दैट मीन्स 4 times I have to multiply with 80. 4 times I have to multiply with this 8000. Okay, so हमने लॉजिक क्या लिखा है, since the side 15 centimeter is half the size of the earlier tile 30 centimeter and in area you consider the side twice. side into side होता है, तो एक साइड का हम डबल करेंगे, मतलब 15 2 ज़ा, और दूसरे साइड का भी करना पड़ेगा 15 2 ज़ा, राइट. सो दैट गिव्स मी इंटू 4. तो आंसर आता है 32,000 टाइल्स. ये एक तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरा तरीका जो अपना नॉर्मल तरीका है कि जैसे हमने ये किया था, नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर किया था, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन स्क्वायर. तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन स्क्वायर ऑफ 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 225. सो नंबर ऑफ टाइल्स जो रिक्वायर होंगे वो क्या है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. ठीक है, टोटल एरिया तो सेम रहेगा क्योंकि वो रेक्टेंगल का था, दैट इज़ दिस, डिवाइडेड बाय 225 होना चाहिए, एंड दैट विल गिव मी 32,000 टाइल्स. Okay, the fifth sum, find the perimeter and area of a garden with measures as shown in the figure. तो दिस इज़ द फिगर दैट इज़ गिवन. ओके, जिसका हर एक साइड है 13 मीटर्स. ओके, तो पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिख देंगे. ईच साइड ऑफ द गार्डन इज़ 13 मीटर्स, ये दिया गया है. एंड व्हाट इज़ टू फाइंड, टू फाइंड इज़ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन एंड द एरिया ऑफ द गार्डन. तो हम लॉजिक क्या यूज़ करेंगे, नाउ सी, ये जो फिगर दिया गया है पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका शेप स्क्वायर टाइप का है या रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है. देन डिपेंडिंग ऑन दैट आपको प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना है. अब हमें ये दिख रहा है कि ईच साइड इज़ सेम, दैट मीन्स इट इज़ ऑफ टाइप स्क्वायर. ठीक है, एंड कितने स्क्वायर टाइप से, एक बन गया 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ये एक 4 हो गया, और इंटरनल जो अंदर वाला है वो भी आप देख सकते हो, ये फिफ्थ बनता है. ठीक है, लेकिन जब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है हमें सिर्फ बाउंड्री कंसिडर करना है, हमें इंटरनल ये कोई भी बाउंड्री नहीं है तो हमें वो कंसिडर नहीं करना है. सो व्हाट विल आई डू, आई विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ वन ब्लॉक, एंड यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 बाउंड्री के लिए, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी. सो पेरीमीटर ऑफ वन ब्लॉक इज़ 13 + 13, यानी ये 13 13 और 13, क्योंकि ये 3 साइड्स ही दिए गए हैं एक ब्लॉक के लिए, फोर्थ साइड नहीं है. ठीक है, सो वन ब्लॉक का 39 मीटर्स है. सो पेरीमीटर ऑफ द एंटायर गार्डन क्या हो जाएगा, 39 इंटू 4, क्योंकि 4 ब्लॉक्स है. सो दैट गिव्स अस 156 मीटर्स. वैसे ही एरिया ऑफ वन स्क्वायर ब्लॉक है ना. अब हम टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक का एरिया फाइंड आउट करेंगे. एंड यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है, पहले हमने देखा 5 ब्लॉक्स है ना, तो हम एरिया एक का फाइंड आउट करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अगर मैं एरिया कंसिडर करती हूँ तो वो क्या होता है, जो अंदर वाली जो सारी जगह होती है उसको हम एरिया कहते हैं. बाउंड्री इज़ पैरामीटर, और अंदर का सारा जो जगह है दैट इज़ ए एरिया. तो देखो ये एक हो गया, ये दूसरा, ये अंदर तीसरा, चौथा, और जो बीच वाला स्क्वायर है वो फिफ्थ. ठीक है, सो
एरिया का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, दैट इज 13 इंटू 13, दैट गिव्स अस 169 स्क्वायर मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ एरिया. तो एरिया ऑफ द एंटायर गार्डन क्या होगा, 169 इंटू 5 बिकॉज 5 blocks, दैट गिव्स अस 845 स्क्वायर मीटर. So thanks for watching guys. Please like if you enjoyed the video and don't forget to subscribe and also comment below. And as always, be cool and have fun. Ciao.